Assalamu alaikum, me Ruqiya ma'am, and I am going to deliver the lecture on the topic biodiversity, which is in your syllabus. Biodiversity. What does the word biodiversity mean? The word biodiversity, it includes the whole thing which is present on the surface of the earth. Biodiversity in means the totality of the life. The totality of the life which is present on the surface of the earth from micro से लेकर macro तक, from very minute organisms से लेकर to the complex organism तक. This word biodiversity, it was coined by Walter Rosen in 1986. Dr. Jatro, one of the greatest scientists, he has given 14 definitions regarding biodiversity. But the definition as per IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and UNP, which stands for United Nations Environment Program. According to them, the word biodiversity means the totality of genus, species, and ecosystem in a given region. The biodiversity means the variety and the number of plants, animals, and other organisms that exist in ecosystem. It means that everything, biotic, abiotic components on the surface of the earth means biodiversity. Life on the surface of the earth means biodiversity. Now, levels of biodiversity. There are 3 levels of biodiversity: genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Now, we will discuss one by one. What do you mean by genetic diversity? Genetic diversity, it is related with the genes. Genes are the basic units of heredity information from one generation to another generation, from parents to offsprings. It means that they resemble with each other. आप खुद ही देख लीजिए, अगर किसी का बेटा होगा या बेटी होगी, she or he is quite similar with her or his parents. आप खुद ही देख लीजिए. हम फिर बोलते हैं ये फलानी का बेटा है, ये फलानी की बेटी है. कैसे? क्योंकि कुछ ना कुछ फीचर्स उसके बॉडी में जो होते हैं, शक्ल, कलर, साइज, आईज, नोज, ये मिलते जुलते हैं. वाई? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स. दीज जीन्स दे शो डिफरेंट वेरिएशंस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू जीन्स. जब नए जीन्स मिलते जुलते हैं, दे गिव राइज टू द न्यू वेराइटी, न्यू combination, that is called genetic diversity. For example, of लीजिए rice that belongs to only one species, Oryza sativa. Only specific scientific rice का जो scientific name है वो है Oryza sativa. क्योंकि अगर if we go other country, they don't know what is this rice. There we should use scientific name of the things, so that they came to know that this word, what does it mean. आया समझ में? Oryza sativa. of इसकी एग्जाम्पल लीजिए. देयर आर वैरायटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज ऑफ राइस. अपने ही इलाके में लीजिए, कश्मीरी इलाके में लीजिए, यहाँ पे कितने सारे वैराइटीज है चावल के. दे डिफर, साइज में डिफर है, शेप में डिफर है, कलर में डिफर है, और इवन की फ्लेवर में. बासमत का देखिए, कश्मीरी चावल का देखिए, द राइस विच वी गॉट फ्रॉम द गो डाउन स्टोर्स, उसका अलग होता है. वाई? इट इज़ ऑल. और इवन की न्यूट्रेंट कंटेंट में देखिए, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स. कश्मीरी चावल में देखिए, इफ़ यू फाइंड दैट कश्मीरी चावल दैट कंटेन्स हाई कंटेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट गिव देम Kashmiri chawal. Why? Because it contains high content of this carbohydrates.
Why it is so? अगर एक ही है, चावल है, why these difference? क्यों है difference? It's all because of the genes. आए समझ में? आप एग्जाम्पल लीजिए, टमाटर का देखिए, हमारे हाइब्रिड होते हैं, कश्मीरी होते हैं. वाई दिस डिफरेंस? वो जल्दी ही उगते हैं, जल्दी ही राइप हो जाते हैं, जल्दी ही फ्रूट्स देते हैं. प्लांट्स, जो टमाटो प्लांट्स है, जो भी हाइब्रिड सीड्स होते हैं, वो जल्दी. वाई इट इज सो? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स, बट दे डिफर in size, color, shape, aroma. It is all because of genes. This is called genetic diversity. Hope you understand. Now another level is species diversity. Species diversity means the richness of the species. In an area where there are many species, that is called species diversity, but it doesn't mean in number. It doesn't mean in number. Different types, it means different types of species should be there in an area. And this species diversity, it mainly depends upon the climatic condition. Where the climatic condition are favorable for the organism, for the plant, फॉर माइन्यूट से लेकर माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सूट है कि नहीं. दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी. एंड एग्जाम्पल है इसकी, आप दो एरिया लीजिए, एरिया ए एंड एरिया बी. एरिया ए में है 3 टाइप्स ऑफ स्पीशीज, लेकिन डिफरेंट है. 2 एम्फीबिया एंड 1 रेप्टाइल. एंड इन एरिया बी वहाँ पे ओनली 3 टाइप्स ऑफ ये हैं, only 1 type of species, either amphibia or reptile. जो एरिया ए है वहाँ है 2 different types of species. It means that species diversity is higher in area A as compared to area B, because in area A there is environmental conditions are suitable for the growth of the organisms, either plants, either animals or microorganisms, as compared to area B, the richness in this species. Another level is ecosystem diversity. Ecosystem diversity includes as already a whole thing which is present in the ecosystem. Interaction between biotic and abiotic with environment. It includes ecological niche, what is the profession of an organism, food chain, what it eats, food web on different kinds of food chains, interlinking of network of food chains, food web, trophic structure, pyramid, energy flow from one food chain to another, from one level to another level, whole thing, nutrient cycles. It includes ecological succession, how the life starts from a bare rock and ends at a climax in a forest. It includes whole thing in ecosystem. We study the whole thing of the biosphere, of the biodiversity, right? Hope you understand. Now another topic is value of biodiversity. Value means what is the importance of the biodiversity? Why should we conserve it? What is the importance of the biodiversity? The value of biodiversity has been classified by MC Neely et al. Et al means it is followers. ये ग्रुप होता है और इसमें जो बाकी साथी होते हैं, इसमें जो हेड होता है, लीडर होता है, उसी का नाम लिखते हैं. फिर जो बाकी साथी हैं उसको लिखते हैं सीधे ही एट ऑल. इन 1990 में उसने दिया है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वी शुड डिस्कस इट वन बाय वन. वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट वन इज कंसेप्टिव वैल्यू. कंसेप्टिव वैल्यू मीन्स when we get these materials from the biodiversity, products from the biodiversity, and we can use it directly by the human beings. It is called conceptual value. We get food for humans, fodder for animals.
जो इंसान खाते हैं उसको बोलते हैं फूड, एंड द थिंग दैट इज ईटन बाय द एनिमल्स इज कॉल्ड फॉडर, ग्रॉस, ग्रेन्स एटसेट्रा. ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, these are consumptive. We can take directly from the biodiversity and use them. और ड्रग की जो एग्जाम्पल हैं वो हैं penicillin that we get from the fungus called penicillium, and another is quinine that is taken from the bark of the cinchona tree, and it is used for the curing of the malaria disease. Fuel, as you already know, fossil fuel is natural gas, petroleum, coal. These are taken from the biodiversity and we can use them. Or these tribal people means those people which live in forest. They are totally dependent on these forest products. They get, even villagers, they get plant twigs from the forest and they use in chulas and cook the food. That is called a consumptive value, means when we get directly from the forest, from the biodiversity and use them. Second one is productive value. Productive value means that when we get the products from the biodiversity, we sold them and get money. That is called productive value. And इसकी जो एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, मस्क परफ्यूम that we get from the musk deer. उसकी जो स्किन होती हैं we get, and tusk from the elephants that are very much costly, that is used for ivory. For that reason these elephants, they are supposed to kill only for those 2 tusks. A big giant elephant is killed. समझ में आ रहा है ना? उसको मारा जाता है only for those, because those 2 tusks, they are much more costly. When we get the products from the biodiversity, we market them, we sold them and get the money. That is called productive value. Use value. Social value. Social values means that in this India country, these social value means that some plants, either their leaves, fruits, flowers, या जानवर, some animals, they are supposed to be worshipped. उनकी पूजा की जाती है. They are giving social value. Their elders think that if they are present on the earth, it is because of them the life exists on the earth. They worship them, like tulsi hai, mango hai, cow hai. They don't supposed to kill them. They give them this value. That is called a social value. Ethical value. Ethical value means it indicates us, it realizes us that what is right and what is wrong. We should not kill. हमें नहीं मारना चाहिए these innocent plants, animals. It means that all life must be preserved. हर एक को जीने का हक है. जिंदा रहो और दूसरों को भी जीने दो. इसमें जो है इथिकल वैल्यू में, इसमें एक पिजन है, पैसेंजर पिजन और डोडो. It is not present on the surface of the earth because it has gone be extinct due to the hunting, killing or by human beings. And it seems, और ये बहुत बुरा लगता है जब हमारी वजह से, ड्यू टू ह्यूमंस की वजह से कोई जानवर या कोई इस दुनिया में अब नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ वी ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट दे गेट थ्रेट. इनको खौफ है. दे आर सपोज टू बी एक्सटिंक्ट. अनदर वैल्यू इज एस्थेटिक वैल्यू. एस्थेटिक वैल्यू मीन्स दैट these biodiversity, when we preserve them, plants, animals, flowers, everything, that people from far away, आप खुद भी देख लीजिए यहाँ पर निशात
शालीमार हैं, दाशिगाम नेशनल पार्क हैं, हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हॉकरसर लेक हैं. People are supposed to go there. They want to see the natural beauty. जब वो किसी पार्क में जाते हैं, एंट्री के लिए पैसे देने पड़ते हैं. तो विलिंग, दे देते हैं, दे चाहते हैं कि हम दे पैसे और हम देखेंगे नेचर की ब्यूटी. This, when we pay the money for to see the nature's beauty, it is called ecotourism. Understand? It is called ecotourism because people spend both money as well as time to see the biodiversity, to see the life. हांगुल कैसा है, एलिफेंट कैसा है, हम भी देखना चाहते हैं. लॉयन कैसा है. You're supposed to pay for that. और इसकी वजह से जो ये है उस नेशन की, उस स्टेट की, इसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो भी डेवलप हो जाती है, वो रिच हो जाती है. नाउ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. व्हाट आर द थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी? क्या क्या है, किन वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है ये खौफ में आ गई है, थ्रेट में आ गई है, कम होने लगी है? व्हाट आर? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. Because of the human activities, these wild plants, animals, they are supposed to got extinct. They are supposed to got vanish. Wildlife totally vanish हो गए because of human activities. Now we shall discuss one by one what are the points regarding to threats to biodiversity. First one, habitat destruction. Habitat, as already I told you, living place of an organisms. Living place where it is environment, it is soil, water, air, abiotic factors, biotic factors, they suit the living organisms. जहाँ पर उसको ये सब सूट करते हैं और वो ग्रो करता है, that becomes it is habitat. और जब हमने ये habitat डिस्ट्रक्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, वो फिर एक्सटिंक्ट हो गया, डेट प्लांट, डेट ऑर्गेनिज्म. वो फिर किसी और जगह ग्रो ही नहीं उसने किया एंड इट गॉट एक्सटिंक्ट. जो ये है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जंगल है, इसको करो, कन्वर्ट इट इनटू बैरन लैंड, बनाओ वहाँ पे बिल्डिंग्स, बनाओ रोड्स, रेलवे, बनाओ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. इट लीड्स टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. आप खुद ही देखो, पहले यहाँ पर नहीं थी ये रेल, जो यहाँ पर कश्मीर में रेलवे नहीं थे, फिर वहाँ पे जो वो थे पैडी फील्ड्स में पैडी प्लांट्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रोब्स थे, वाटर था, सब कुछ था. जब उनको बोला गया नहीं, वी विल पे यू ऑफ ये लैंड दीजिए हमें, वी विल पे फॉर इट, और जो ये हैं लोग हैं उन्होंने कहा ठीक है हम पैसा लेते हैं, और जो वहाँ पर जो लाइफ थी वो टोटली वैनिश हो गई. फिर बनाया गया वहाँ पे कंक्रीट रोड, जहाँ पे रेलवे. अब चले हो रेल में चढ़े हो, आप खुद देखो वहाँ पे, यहाँ से पैडी फील्ड्स है और यहाँ से कंक्रीट रोड बना है थ्रू विच पैसेंजर्स पास अवे. वहाँ पे जो लाइफ थी, जो माइक्रोब्स थे, डेट गॉट वैनिश, वो मर गए. ठीक, राइट. ये छोटी एग्जांपल है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की. जो अनदर है वो है जेनेटिक इरोजन. जेनेटिक इरोजन जो है वो मैन है. इसमें क्या है, इसमें है, देखो आप उन्हीं से सीखो. जो काऊ हैं, जो ऑक्स हैं, या कुछ और आप लीजिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल काऊ हैं या ऑक्स हैं, पहले इसको अब जो जीन्स है, जेनेटिक इरोजन मीन्स जो जीन्स है, अब इनमें इंड्यूस किया जाता है कि ये उस कॉफ को ये बरत दे जो जल्दी ग्रो करे. अगर आप देखोगे बुचर के पास जाओगे, वो बोलेगा ये
कुछ ही महीनों का लगता है, ये कुछ महीनों का है, लेकिन वो अगर कश्मीरी का देखेंगे वो इट टेक्स मनी ईयर्स टू ग्रो इन दैट साइज, लेकिन जो हाइब्रिड होता है वो जल्दी ग्रो करता है। Why? It is all because of induced genes. हम वाइल्ड से जीन्स, हम न्यू जीन्स इंड्यूस करते हैं अपने नेटिव स्पीशीज में, सो डैट वी विल गेट हाई क्वालिटी, हाई क्वांटिटी। आया समझ में? जो हमारे अपने जीन्स होते हैं, नेटिव जीन्स, जो डोमेस्टिक जीन्स, वो आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो जाते हैं। इसी को कहते हैं जेनेटिक इरोजन। आप पैडी फील्ड्स या आप इसका एग्जांपल दीजिए, किचन गार्डन लीजिए, उसमें जो आप टमाटो लीजिए, बीन्स का लीजिए, आप देखिए हमारी जो पेरेंट्स हैं वो अब वो सीड्स बचा के नहीं रखते हैं, दे गेट द सीड्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। वाई? बिकॉज दे आर इंड्यूस्ड जीन्स, उनमें वो जल्दी से ग्रो करते हैं, जल्दी से राइप हो जाते हैं और हाई क्वालिटी, हाई क्वांटिटी का देते हैं। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड जेनेटिक। और हमारे जो अपने पहले जब हम बचा के रखते थे सीड्स, प्रिजर्व करते थे, अब वह नहीं होता है। इट मीन्स दैट दोज थिंग्स हैज गॉन वैनिश। Another point is expanding of agriculture. Expanding of agriculture means that जब population बढ़ गई, फूड चाहे ग्रोथ हो के लिए, for that reason जो forested land have that converted into agriculture lands. आए समझ में? जो फॉरेस्टेड लैंड है that has gone be converted into agriculture to get, so that हर एक सिटीजन को फूड मिले। इससे रिलेटेड है दिस। Another point is impounding of water dams. We have built the dams, building us. For that we have makes the forest lands the barren. We have destroyed the wild varieties of plants and animals for importing of water to get electricity. हमने डैम बनाए ताकि हमें फैक्ट्रीज को पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले। फॉर दैट रीज़न हमने जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया। अनदर द मेन पॉइंट इज पोचिंग, इलीगल हंटिंग, इलीगल किलिंग जो हमने किया वाइल्ड लाइफ को। आया समझ में? इलीगल हंटिंग, इलीगल किलिंग, दैट इज कॉल्ड पोचिंग। यही टू गेट द टस्क्स फ्रॉम एलिफेंट्स, वी किल दैट जायंट एलिफेंट, बिग एलिफेंट, वी डिस्ट्रॉय द फूड चेन। आया समझ में? टू गेट दिस परफ्यूम, different high costly perfume, for that reason, for that purpose we are killing these innocent deers, musk deers. So this is main point for in threatening to biodiversity, killing the biodiversity. Now biodiversity conservation. We have to conserve, we have to give protection to the biodiversity. जब तक बायोडाइवर्सिटी, जब तक लाइफ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फिर हम ह्यूमन्स हैं। आया समझ में? कंजर्व, वाइज यूज, वाइज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। वाइज यूज एंड वाइज मैनेजमेंट जब हम कहते हैं उसी को कहते हैं कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी इट शुड बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी जो हमें कंजर्व करनी चाहिए, ये बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू काइंड्स, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स दैट व्हेन वी गिव the conservation, when we give the protection to the wildlife, to the biodiversity in their own natural habitat, जब हम इनको उनकी ही जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। और जो ये इन सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू कंजर्वेशन इट इज डन, ये हम करते हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आया समझ में? नेशनल पार्क्स ये
एक ये अलग टॉपिक है, बट आई विल गिव इंफॉर्मेशन इन दिस। नेशनल पार्क कोई जगह है जहाँ पर एनिमल रहते हैं, ऐसा एनिमल जो और कोई कहीं नहीं पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड द नेशनल पार्क। आए समझ में? एंड इन दिस नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड। वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। और अगर कोई जा सकता है रिसर्च करने, ओनली साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स जाते हैं वहाँ पर, दैट शुड बी परमिटेड। उनको परमिशन पहले लाया जाता है, फिर वहाँ पर वो अंदर जा सकते हैं नेशनल पार्क्स में। बिकॉज वहाँ पर जो एनिमल है वो ख़ास होता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एंड द लाइफ एग्जिस्ट्स इन दैट पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इट शुड बी प्रिजर्व्ड, इट शुड बी क्योर्ड। आए समझ में? बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। वहाँ पर जाते हैं जो विलेजर्स होते हैं आसपास में, वो जाते हैं और प्लांटिविग्स, प्लांट प्रोडक्ट्स कुछ लाते हैं। बट वी शुड गिव प्रोटेक्शन टू द बायोडाइवर्सिटी सो डैट द फ्यूचर जनरेशन है वो भी देखे कि हमारे जो पहले जनरेशन थी उनके पास क्या था। वी शुड कीप इट। Another ex-SITU conservation means that when we conserve the biodiversity, when we conserve the wildlife, includes plants, animals, microorganisms outside of their habitat, it can be done in seed banks, gene banks, aquaria, botanical gardens, zoological parks, etc. These it means that seed banks, gene banks, if we don't have any animal, it has gone extinct, plant or animal, then we take that gene, we take that seed, and new plant, that very plant, that very animal can grow easily. So that we in these seed banks, in these gene banks, we preserve these genes, those genes which are important for biodiversity. Hope you understand. Allah Hafiz.